Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 16 and the name of our unit is Force and Machine. So my dear students, today we are going to discuss about force. हम मुख्तलिफ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So listen to the question very carefully. What was old means of transportation? Horse cart, ox cart, vehicles led by humans. So these were the ancient or the old means of transport. So what is the difference among old and modern means of transportation? The old means of transportation were led by horses or men. The modern transportation is led by the machinery. Old means of transportation was slow. The present means or the modern means of transportation is fast. So let's start it with an activity. Look at the picture very carefully. This boy is riding a bicycle. So do you like riding a bicycle? How does you apply force to ride a bicycle? So my dear students, क्या आपको साइकिल चलाना पसंद है? सब बच्चों को पसंद होती है. तो आप साइकिल को कैसे चलाते हैं? ऊपर बैठ जाते हैं और फिर जो उसके पैडल्स होते हैं आप उसके ऊपर अपने पाँव रख के क्या चीज़ अप्लाई करते हैं? What are you applying? This is force that you apply. ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आपकी साइकिल जो है वो चल पाती है. यानी कि आपकी फोर्स जो है वो मूवमेंट ऑफ द साइकिल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. तो आपने पहले पैडल्स के ऊपर फोर्स डाली जिसकी वजह से जो उसके व्हील्स हैं वो मोशन में आए. सो दैट्स हाउ द साइकिल स्टार्ट्स मूविंग. Okay, my dear students, student learning outcome for today is in today's lecture, the students will be able to recognize that push and pull moves things fast or slow, push or pull as a force. So my dear students, basically push and pull is known as force. आज हमने इसी को discuss करना है. The pre-reading question, what is force? The push or pull is known as force. In which forms we apply force? Push or pull. Okay, my dear students, let's start the reading. I request you all to please open page number 155 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Force. Force is the action that changes or tends to change the shape, size and position of an object. Push and pull are two forms of force. Here you can see the application of force. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि असल में किसी भी चीज़ की मूवमेंट में लेकर आना, उसकी मूवमेंट को रोक देना या उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर देना, ये तमाम काम फोर्स की वजह से होते हैं. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बाय पुलिंग ही इज पुलिंग द कार्ट. ठीक है, आगे की तरफ खींच रहा है उसको. सो ही इज मेकिंग द कार्ट मूव. द बॉय इज ऑल्सो पुशिंग ऑन द पैडल्स और इस वजह से साइकिल जो है वो मूव कर रही है. सो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर पुश या पुल अप्लाई करते हैं वो मूवमेंट में आती है और ये पुश और पुल जो है ये आपकी फोर्स है. सो इवन अ डोर नीड्स फोर्स टू ऑफ हैंड्स टू बी क्लोज्ड और ओपन. यानी कि यहाँ तक कि जो आपके कमरे का दरवाज़ा है, आपके क्लासरूम का दरवाज़ा है, इसको खोलने और बंद करने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए. इस ग्लास को उठाने के लिए आपको फोर्स चाहिए, आपको लिखने के लिए फोर्स चाहिए. सो एवरीथिंग, the work that you perform needs some force to do. So pushing a car is also an application of force. Uses of forces in daily life. Okay, my dear students, in all above actions, push and pull forms of the force have been used. Push and pull forces usually makes things move fast, while pulling force makes fast moving things slow. So my dear students, जब भी आप किसी चीज़ को push करते हैं तो चीज़ फास्ट मूव करती है. जब आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो उसकी मूवमेंट कंट्रोल्ड होती है और स्लो होती है. So here's a supervised activity. The teacher will take students to the ground, make two teams A and B of almost equal physical strength, conduct tug of war, friendly competition among them, explain the push and pull force while they are applying force. So my dear students, अब आपको अपनी टीचर के साथ ग्राउंड में जाना है और वहाँ टग ऑफ वॉर करनी है, जिसे रस्साकशी भी कहा जाता है. आपको एक रस्सी आपकी टीचर प्रोवाइड करेंगी, दो टीम्स बनेंगी A एंड B और फिर बच्चों ने रस्साकशी करनी है. जो यहाँ सेंटर में बेसिकली रिबन बंधा हुआ होता है और जो रिबन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है वो जो है वो जीत जाता है.
सो आपने इस तरीके से ये टग ऑफ वॉर जो है वो, या यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है ग्राउंड में, दोनों टीम्स ने कोशिश करनी होती है कि वो लाइन से दूसरी तरफ जो है वो टीम को खींच ले तो वो जीत जाएगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से टीचर जो है बच्चों को पुश और पुल का जो है वो कॉन्सेप्ट देंगी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप रस्सी को पुश कर रहे हैं तो आप उधर से दूसरी टीम को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं. तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे. ईच टीम विल पुल अदर, वन थिंग ग्रेटर फोर्स विल विन द गेम. यानी कि दोनों टीम्स जो है वो अपनी तरफ पुल करेंगी और फिर क्या होगा, जिस टीम का ज्यादा फोर्स होगी वो जीत जाएगी. Okay, my dear students, for evaluation, quickly answer the following question orally. What is force? Push or pull? Very good. Give some examples of uses of force. Riding on bicycle, writing on your copy, picking up your bag, everything requires force. What is pull of force? When you are pulling something towards you, that is pull of force. What is push of force? When you push something push something away and the motion becomes faster, that is push. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So, my dear students, write if it is pull or push of the force. So, this is pull or push. This is push. This is pull or push. This is push. This is pull or push. This is pull. This is pull, this is push, this is pull, and this is push. So this is how you will complete the worksheets. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. So my dear students, for the homework, you will do question number 4 given on page number 161. And the wrap up of the lesson is force is the action that changes or tends to change the shape, size, and position of an object. And push and pull are two forms of force. So my dear students, I hope now you know what is force and what are push and pull. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.